नमस्कार। आज मालवा मीडिया फेस्ट के इस अद्भुत फेस्टिवल के तहत हमारे बीच है मेजर नम्रता धस्माना मैम। और ये आर्मी लाइफ भी जी चुकी है मैम, और अभी कॉर्पोरेट में वर्क करती है। मैम, क्या हम हमारे दर्शकों को कुछ अपने बारे में बताना चाहेंगे? Sure. Thank you so much. First of all, Jai Hind and Jai Bharat from my side. And जैसा कि आप सभी को पता है, मैं वेटरन हूँ, मेजर नम्रता धस्माना। 14 ईयर्स मैंने फोर्सेस में एज अ प्रिविलेज सर्विस दिया है देश हित के लिए। एंड उसके बाद मेरा स्मूथ ट्रांजिशन था कॉर्पोरेट का। आई एम ऑल्सो एन अलुमनी ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ। स्ट्रेटेजिक लीडरशिप हैज़ बीन माई फोर्टे. I'm also Gallup professional, and I'm also a design thinking practitioner. इतना सब पढ़ लिखने के बाद आई मीन फोर्सेस में पूरा अपने को समर्पित करने के बाद इतना पढ़ने लिखने की ज़रूरत कॉर्पोरेट में इसलिए पड़ी क्योंकि इंडस्ट्री को समझना बहुत ज़रूरी है बिफोर यू डू द ट्रांजिशन. एंड आई वाज ब्लेस्ड. जब मैं कर रही थी तो मुझे काफ़ी अपने कॉर्पोरेट लीडर्स का सपोर्ट मिला, जहाँ पे उन्होंने मेरे को बहुत असिस्ट किया हर चीज़ को, कॉर्पोरेट के, इंडस्ट्री के हर एक पहलू को समझने के लिए. एंड दैट्स वेयर मेरा बहुत एक आई वुड से एक सक्सेसफुल और स्मूथ ट्रांजिशन हो गया था कॉर्पोरेट में. समवन टोल्ड मी वेरी अर्ली इन माय कॉर्पोरेट जर्नी कि नम्रता, 14 साल के बाद कॉर्पोरेट में जा रहे हो तो एक ही इंडस्ट्री के साथ मस्ट स्टिक रहना और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ज़रूर जाना. सो मेरा जब मैं फर्स्ट अपना कॉर्पोरेट स्टिंट करी थी तो आई हैड टू ऑफर लेटर्स, वन ऑफ लॉजिस्टिक्स कंपनी and the second was of manufacturing industry, and I choose to be in the manufacturing, and certainly I will not regret my decision. Manufacturing industry, हम आज भी SMEs और MSMEs की बात करते हैं, although मैं वेदांता ग्रुप में थी, बट मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडिया का बैकबोन है, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग को समझना बहुत ज़रूरी है. ये पूरा इकोसिस्टम रहता है. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बाद मैं BFSI में थी, फाइनेंस एंड बिजनेस में मैं स्ट्रेटेजिक रोल पे थी, एंड उसके बाद मैं एक ITS कंपनी जेनपैक में थी. सो ये सब डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज देखने के बाद, ऑर्गेनाइजेशंस देखने के बाद आई रियलाइज्ड सर्टेन गैप्स. सो मैंने कुछ रिसर्च करके पॉलिसी पेपर्स लिखे. आई एडवोकेटेड गवर्नेंस इन एंटरप्रेन्योरशिप बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप हो रही है, पर एंटरप्रेन्योरशिप या SMEs या MSMEs हमारी स्केल अप करने में इश्यूज लाती हैं, प्रॉब्लम आती हैं. एंड स्केल अप करने के बाद जब उनके एक्सपोर्ट्स करने की बारी आती है तो भी वो कहीं ना कहीं अटक जाते हैं. सो दिस इज एंटायर द इकोसिस्टम ऑफ इंडिया दैट नीड्स टू ग्रो, एंड गवर्नेंस आई अंडरस्टैंड एंड आई फील इज अ पिवटल वेरिएबल जो कि समझने की बहुत ज़रूरत है. क्योंकि अगर गवर्नेंस नहीं होती है तो चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए, चाहे इकोनॉमिक्स आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, कहीं ना कहीं वो फेल हो जाता है. सो माय फर्स्ट पेपर एज अ पॉलिसी पेपर वाज गवर्नेंस इन एंटरप्रेन्योरशिप. It got published with BRICS Research Institute in Routledge. It's a global journal. Then my second paper was strategic importance of microeconomics in building the national resilience. So इसमें कितने layoffs होते हैं, क्यों layoff होते हैं, कैसे होते हैं layoff, moonlighting क्या importance है, पैंडेमिक के टाइम पे इतने layoffs और उसके 6 महीने बाद फिर से hiring, same organization. So what is the lacuna behind it? ये क्या होता क्या है, माजरा क्या है, वो सब उसमें रिफ्लेक्शंस हैं काफ़ी. इकोनॉमिक मॉडल्स या बिजनेस मॉडल्स इंडिया में क्यों डिफरेंट होने की ज़रूरत है, क्योंकि मोरलेस हमने जितने भी वेस्ट के जो मॉडल्स हैं उन्हीं को कॉपी पेस्ट कर दिया है, नॉट अंडरस्टैंडिंग कि हमारी इंडिया की डिवर्सिटी बहुत डिफरेंट है. टायर 2 टायर 3 सिटीज़ के जो हमारे नुमाइंदे आते हैं, एम्प्लॉयज़ आते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है, उनके माइंडसेट्स डिफरेंट है, और वही हमारी डिवर्सिटी है. सो ये सब चीज़ें उसमें रिफ्लेक्ट करी हुई हैं. और आई ऑल्सो इंटरव्यूड सम ऑफ द स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया, रिफ्लेक्टिंग कि पैंडेमिक के टाइम पे नन ऑफ दीज पीपल फायर्ड देयर एम्प्लॉयज. मतलब अमेजन, गूगल, इतनी जो बड़ी रॉबस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने सभी ने कोई भी लॉस में नहीं रहा पैंडेमिक में, ठीक है, बट फिर देन ऑल्सो दे फायर्ड people, and most of the people who got impacted were Asians.
इंडियंस, Yes, ma'am. ठीक है, एशियंस में इंडियंस ही आते हैं उन सबसे ज्यादा। कंपनीज में मोस्टली एशियंस और इंडियंस ही है। एग्जैक्टली लेकिन जितने भी हमारे स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं जो पहाड़ों में एक एग्रो बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, उन्होंने इंश्योर किया कि उस टफ टाइम में भी किसी की जीविका ना रुके, किसी के घर में जो ईंधन चल रहा है वो ना, दैट इज माइक्रो इकोनॉमी, दैट मेक्स आवर कंट्री रोबस्ट एंड स्ट्रांग. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So that was my second paper, which will get published either in January end and February mid में होगा. Okay, ma'am. Then my third work was on book, again which I find a gap, क्योंकि हम सब terrorism की बातें करते हैं, ये हो गया, यहाँ धमाका, वहाँ धमाका, सब कुछ, but nobody gets into the root cause of it. कैसे हो रहा है? मैम आपकी बुक का नाम क्या था? Okay, so this is Underworld Tyranny, the Okay, traffickers reign unveiled, the only strategic resource not only in India but global, which covers entire 3 crimes: drug trafficking, human trafficking, and wildlife trafficking under one cover. This is not only a story of India, but also covers the demographics of entire globe. Not only an army narrative, but also perspectives of retired DEA of USA, some Interpol officers. Now, these are the people who actually burst the drug cartels. Okay, ma'am. These are the people who actually burst जब ह्यूमन ट्रैफिकिंग के कार्टल्स आते हैं, चाहे वो गोवा में हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट रीजन So all में over हो. the world. It's absolutely, so it's a strategic resource. I don't dilute it by saying that it is a book. It's a strategic resource written in India. So aim is and purpose is to make it a reference book of India, हाँ. because जब भी हम कुछ रिसर्च करना कुछ भी करते हैं तो हमारे सारे जो रेफरेंसेस होते हैं वो बाहर के होते हैं. सो इट्स अ वेल, बहुत ही थॉरोली काम हुआ है. 3 साल लगे मुझे इस किताब को काम करने में. Wonderful, ma'am. And well researched resource with lots and lots of perspectives. And another uniqueness about this book is industry has also been included. Now, since I have been in industry, so manufacturing industry का क्या रोल आ जाता है इसमें, सलून इंडस्ट्री का क्या रोल आता है इसमें, pharmaceutical industry का क्या रोल है, and again governance comes into and government या regulations, कोई policing नहीं होता है कि उनको regulations लगा के हम उनके profits को reduce. It is making their reputation better. It is making them more sustainable business. So that's where it's a strategic resource with a lot of facts, with well-researched work, with some interesting narratives and some interesting stories of actually people who have done some work, with some strategic interventions which are required to be done to understand to understand the reason behind this a crime which is happening, and to put it into a narrative. One should not be uncomfortable, and it should not be a narrative. Drug trafficking हो रहा है, human trafficking है, वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग भी है, वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग भी इग्नोर होता है, बट इसके भी वाया जो है पोर्ट्स के थ्रू एंड जंगलों के थ्रू किस तरह से जंगली जानवरों की खाल के बीच में किस तरह से ट्रैफिकिंग हो रहा है. एंड व्हाट इज इट डूइंग? इट इज कंसेप्चुअलाइजिंग कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमी. और कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमी से जो पैसा बनता है वो टेररिज्म में जाता है. तो टेररिज्म के पास वरना कहाँ से पैसा आएगा? सो दैट इज वेयर मतलब the bottom line of it is conflict economy and illicit funding, and all 3 crimes have been included into under one cover. And then I incorporated my own firm as Center of International Futures. This is a research firm. Purpose is again to include the intellectual minds of India, not to get carried away. The research assistants, but not to make them understand what is a research methodology. रिसर्च मेथोडोलॉजी भी क्या होती है वो भी कईयों को नहीं पता होती है. सो रिसर्च ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बगैर रिसर्च के हम कुछ नहीं कर सकते. फिर तो जो यहाँ पे मिला वही कॉपी पेस्ट, एवरीथिंग इज देयर ऑन चैट जीपीटी. सो रिसर्च चैट जीपीटी के बाद भी रिसर्च कैसे करना है, व्हाट आर द टूल्स दैट आर देयर. सो आई डू हैव सम रिसर्च असिस्टेंट्स विद मी, and so that they know what is the importance of research, and we can do some work on this at whatever level, not only in India but even at a global level as well. So मैम ये तो आपकी बुक और आपकी कॉर्पोरेट लाइफ के बारे में बात हो गई. अब थोड़ी सी डिफेंस लाइफ और आर्मी लाइफ की तरफ भी बढ़ते हैं. जैसे आपने कहाँ कहाँ आपने पोस्टिंग सर्व की है और कुछ ऐसे एक्सपीरियंस जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? Sure.
Okay, army life, 14 years. I started एक बात और मैम in पता चली कि 2000. आप डाइविंग टीम में भी थे आर्मी के. Yeah. So I think I joined forces because of adventure. One, I was यस very मैम. clear. मतलब मुझे एक बैलेंस लाइफ की तरफ मैं प्रेरित थी, और दूसरा समवेयर आई लाइक टू टेक रिस्क्स. यस मैम. So I was वंडरफुल. selected in both Navy and Army, वंडरफुल. but like a good Uttarakhandi, I chose to be in Army. Yeah. I didn't choose white uniform, but I Yes chose ma'am. olive greens with me. And certainly the leadership that you have to exhibit on ground with your troops in the Ma'am. complexities of the environment. मतलब वही तो हम जब बात कर रहे हैं, but जब हम when we live those kind of experiences, यस मैम. वो एक you अलग become a ही. different person altogether. You get transformed. आप छोटी छोटी चीज़ों से ऊपर उठ जाते हो. So certainly army gave me a lot of these kind of things. Skydiving came to my way as a young captain. मैम. It was a selection of army women skydiving team, the Wow. first time in India. एंड हमारे को पहले स्टैटिक जंप्स कराई थी 4500 से, एंड उसके बाद जो पास हो रहे थे, मतलब जो कंफर्टेबल थे बेसिकली यस मैम. जंप्स में, क्योंकि जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो सेंस कर लेते हैं कि कौन हाँ comfortable कौन नहीं है. कंफर्टेबल है. इसे कहते हैं एग्जिट हेजिटेशन. मैम. तो जब हम 4500 से जंप कर रहे हैं तो एग्जिट हेजिटेशन तो नहीं है हमको. तो डर सबको लगता है, ऐसा Yes, नहीं है कि ma'am. डर किसी को नहीं लगता, बट उस हेजिटेशन को ओवरकम कैसे करना है, कितने सेकेंड्स में करना है. It's that is the power of your mind. So I was very passionate about skydiving, and it came to my way. Of course, I took it as an opportunity. I was posted in Gangtok 517 ASC battalion. Gangtok. Yes, 17 Sikkim में Wonderful थी मैं. place. Yes, of course. And of course I was graduated from static lines to मेरे को free falls के लिए जाया गया था. मैम. In my 9th or 10th jump, unfortunately, I broke my wrist. Oh. And we were 3 lady officers who got selected, and I was in the reserve because I was having my this fracture, so we could Injury. not form the team. I had an injury. We could not form the team. However, and it's again a story. मतलब मॉर्निंग में मुझे चोट लगी थी. मेरी जो लैंडिंग थी वो क्रैश लैंडिंग थी. आई मैनेज माई लैंडिंग, बट व्हेन आई लैंडेड आई फेल डाउन, एंड नीचे पत्थर थे, और जो मेरा ये लेफ्ट हैंड है उसमें काफ़ी सारे पत्थर एक साथ लग गए थे. सो ऑफकोर्स पेन हुआ, पर Yes, दिखाया नहीं. उस टाइम पे जोश अलग होता है. एंड आई जस्ट हेल्ड माई रिस्ट एंड आई went to my hangar जहाँ पे हम बैठा करते थे, जहाँ पे ALH पार्क होते हैं, and I was just waiting कि अब जब next jump आएगी तो. So slowly and gradually my wrist was swollen. तो जब हाथ टूट जाता है, हड्डी टूट जाती है, तो swelling आ जाती है. And my instructor called and he said, "Yeah, Dhasmana, jump." I said, "Yeah, yes sir, of course." So look at your bloody hand. So ठीक है, हो जाएगा. No, you go to the hospital. अनफॉर्चुनेटली जब हॉस्पिटल गए तो पता चला कि फ्रैक्चर है, एंड आई कुड नॉट जंप. बट देन आई टुक अ लिटिल पॉज. आई गॉट हील्ड. उसमें काफ़ी हमने स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस की, एंड देन आई वेंट टू मीसामारी. I completed my jumps, and I successfully became the safe skydiver. So, if we see it, so you were the first woman skydiver. Skydiving team, yeah. अभी Okay. बहुत सारे हैं, बट उस टाइम पे जो एक फॉर्मल टीम का को फॉर्म करने का जो एक वो था, उसमें we three were the first ones who got who graduated to the skydiving level, and yeah, we all were doing things together. So, मैम उसके बाद आपकी पोस्टिंग कहाँ है? So from Gangtok, I was posted to Ambala. Oh wow, wonderful. And from Ambala, I had gone to Calcutta. And then from there I had gone to Jammu Kashmir again. Oh wow. So that's a how beautiful it is. place, Jammu Kashmir. Yeah, I mean, for tourists, yes. But when you are on duty, you have a different responsibility altogether. All the Yes, places are good. Every place has its own, I think, forces में, आर्मी में खासकर हम लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री देख लेते हैं. मैम. So yeah, that has been the. मैम एक चीज़ और कि अभी थोड़े जियोपॉलिटिक्सली अगर हम देखें
तो आपको क्या लगता है इंडिया को ये चीज़ें डेवलप करनी चाहिए, कुछ ऐसे चीज़ें जो इंडिया को मतलब डेवलपमेंट में लानी चाहिए, और कुछ ऐसी चीज़ें जो इंडिया में वेल डेवलप्ड है जो और किसी नेशन में इतनी वेल डेवलप नहीं है? सबसे पहली बात जो इंडिया में वेल डेवलप है, इंडिया की एंशियंट विजडम। यू ओपन अर्थशास्त्र, you have everything inside that book. It is just that we are not following that. Whether it is strategy, whether it is politics, whether it is leadership, whether it is economics, whether it is even about resource diplomacy, mineral diplomacy, how to do entrepreneurship, how a king has to, look after even the taxes of the entrepreneurs. Everything is in the book. So we have all the resources in the form of ancient wisdom, but we have not practiced them. We have never been able to execute them. हम बस शास्त्रार्थ के ही लेवल पे रह गए, और जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमको challenges पता चलते हैं, and then we maybe, if need be, we innovate, and then we take it to a different level altogether, and we even globalize our knowledge. Yes, so that is we have. Whenever I write, I always take excerpts and everything from Arthashastra, from what Kautilya has said. चाहे मिनरल डिप्लोमेसी की बात होती है, चाहे जियोपॉलिटिक्स की बात होती है, चाहे किसी भी चीज़ की बात होती है, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप की बात होती है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एंटरप्रेन्योरशिप में भी चैलेंजेस क्या आते हैं, टैक्सेस जो लगते हैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जीएसटी हो या कुछ भी हो, या एक्सपोर्ट्स के लिए हो, तो वो क्या चैलेंजेस है, किस तरह से उनको डील करते हैं. वन इज दैट, एंड सेकंड व्हाट डिड यू आस्क मी, कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो इंडिया को अभी डेवलप करनी चाहिए, लाइक इंडियन गवर्नमेंट अभी इस पे फोकस इतना कर नहीं रही. वन इज सर्टेनली रिसर्च एंड डेवलपमेंट. यस मैम. दैट इज द की towards development. That is the key towards making any country a global leader. When do we become leader? When we do things differently. जब हमें लोग फॉलो करते हैं. अगर कुछ यूएसए कर रहा है और हम भी वो कर रहे हैं, then we are not a global leader. When we do something differently and others follow us, then we become a leader. So research is the first step towards anything. So research and development में focus करना बहुत ज़रूरी है. It is not insane, it is not abstract, it is a scientifically proven concepts. जब हमारे आते हैं तब हम किसी भी चीज़ को develop करते हैं. Second is technology. Technology is expensive. One is yes, that. Ma'am. Technology is redundant, बहुत जल्दी outdated हो जाती है टेक्नोलॉजी. तो इसलिए टेक्नोलॉजी पे जब हम बात करते हैं तो every day is a new day. Every day you have to keep changing it. You have to keep innovating. You have to just keep thinking. And अभी तो मतलब टेक्नोलॉजी एक बहुत abstract सा word है. अभी तो robotics की बात हो रही है. Robotics have started coming in market. Yes, ma'am. So I was speaking to one entrepreneur who is in Europe, and he has his own company, and he has a fleet of 250 robots. Wow. So 250 bots he has developed along with his team, and they give their bots on lease to their clients. Okay. So that is again when you develop these bots, after being after designing phase, जब आप उस deployment phase में डालते हैं bots को, तो you certainly go through lot of challenges, क्योंकि अभी एग्जीक्यूशन फेज में, अभी जो हम बातचीत कर रहे हैं वो एग्जीक्यूशन फेज में आ जाती है. बट the entrepreneur is Indian, of course, European resident, citizen, and his vision is to make his company a global leader. Wonderful. So that is where we need to broaden our horizons and understand the importance of research and development, understand the importance of innovation, and should learn to be uncomfortable. That's the most important thing. Not अपने ही जो हमने डिजाइन बनाया या जो हमारा थॉट प्रोसेस है उसके साथ चिपक के नहीं कि नहीं ये हमारा है तो यही सबसे अच्छा है. इमोशनली डिटैच होके अपने काम को करने की जरूरत है, जिससे कि जब हमें रिक्वायरमेंट पड़े, जब हमारे स्टेक होल्डर्स जो वहाँ बैठे हैं, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं, उनके हिसाब से अपने उस प्रोडक्ट को कस्टमाइज करें, एंड देन हमारा कंसेप्चुअलाइज होती है एंटरप्रेन्योरशिप. क्योंकि जॉब करने में और जॉब क्रिएशन में बहुत अंतर होता है. व्हेन यू क्रिएट जॉब्स, यू कम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड यू आर देन
actually then you are creating things not only for India, but you are then taking it globally as well. So then again you are towards the leadership in that. So this is where India should need to focus upon entrepreneurship, innovation and R&D. मैम आपने अपनी आर्मी लाइफ के लिए बारे में बताया, आपने आर्मी ज्वाइन की थी एडवेंचर के लिए, और उससे मेरे दिमाग में एक छोटा सा कोट आया है जो मैंने पढ़ा था कहीं पे, कि जो नॉर्मल लोगों के लिए जो आर्मी में नहीं है, उनके लिए जो लाइफ टाइम एडवेंचर है वो एक आर्मी पर्सनल के लिए डेली रूटीन है। या राइट मैम? एक लास्ट क्वेश्चन और, कि आज आपको कैसा लगा, मतलब मालवा मीडिया फेस्ट आपने अटेंड किया आज? यस, मालवा मीडिया फेस्ट एक बहुत ही अच्छा, मैं पहली बार आई हूँ, सो एक बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट है नॉलेज शेयरिंग के लिए। एक इकोनॉमी होती है नॉलेज इकोनॉमी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। यस, we do not have any knowledge partner. KPMG is the only knowledge partner in Big Four companies, and Yes, KPMG is again not an Indian company. So जब हम नॉलेज की बात करते हैं, तो अब जब हम यहाँ आ रहे तो हम इंडिया के पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं। सो ये जो इस तरीके के जो लिट फेस्टिवल्स हैं, मालवा लिट फेस्ट में भी हमने जितने भी डिस्कशंस करे, हमने जितने भी शास्त्रार्थ करे हैं, वी हैव गिवन द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया, whether it is India's challenge, whether it's India as a leader, जैसे ऑप सिंदूर जो हमने इतने एक्यूरेट तरीके से किया, the world should learn from us that how actually tactical operations are to be led without harassing anyone and just staying focused towards their target and operation. So that's where I think it's a very good attempt towards, first is knowledge sharing platform, second touching the youth and some dignitaries of that particular region and making them aware about the literature and making them aware about the knowledge what is prevailing not only in India but even global level. थैंक यू मैम। तो इसी के साथ आज हम आपसे अलविदा लेते हैं। डू फॉलो मालवा मीडिया फेस्ट ऑन इंस्टाग्राम और स्टे अपडेटेड। थैंक यू मैम, आपका आप इधर आए, हमारे साथ टाइम स्पेंड किया, हमको बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। थैंक यू। जय हिंद एंड जय भारत।